So what happens over here is that we have got $1 equivalent, in fact, £1 equivalent to $2.5. And in the previous part, you have figured out the value of postcard in dollars. Previous part में आपने figure out कर लिया था उसे. तो postcard जो है उसकी value आ रही थी around 3.1 cent. So it was equivalent to 3.1 cent for one postcard. They are saying that you need to figure out the total cost, like 15 postcards ki. This is question number 1, part B2. So you have got the cost of one postcard as 3.1 और total जो आपने postcard purchase किए थे that was 15. So you need to find the total cost, like all of the postcards cost is to be figured out in terms of pounds. तो यहाँ पर आप रखेंगे x. अब एक प्रॉब्लम जो सबको फेस हुई वो ये थी, like most of you did the same mistake that you took the value in cents, लेकिन previously जो रेशो आपके पास लिखा हुआ था वो डॉलर्स में था. So the problem was over here only कि आप लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया. So you need to convert this dollars into cents. तो जब आप इसे कन्वर्ट करोगे you will see that it turns out to be 250 cents like this. और फिर इसे आप sort out करेंगे and you'll have your final answer by cross multiplication. Okay, now coming on to the very next question, जो कि probably question number 2 part B है, where the person is buying some washing machine. अब यहाँ पर एक major flaw ये था, most of the students took it in the form of compound interest. ये compound interest का case नहीं था. The question was like the washing machine was being sold at $980. The washing machine being sold at $980. Now we have got a finance offer over here. The finance offer was to pay 20% down payment. The deposit or the down payment was 20% and 24 months of $36 each. तो यहाँ पर बेसिकली करना ये था कि आपने इसकी हायर परचेज फिगर आउट करनी थी. They asked to figure out the total extra amount that you are paying. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं how much would it cost more for Levin? The person who was buying was Levin. So how much more would it cost Levin to purchase the washing machine at higher purchase price? तो जो इनकी actual price है that is 980. While higher purchase price could be figured out by the formula जो मैंने आपको बताया था. Higher purchase price का formula बता सकता है मुझे कोई? Can anyone of you tell me what was the formula for higher purchase? Yes, anyone of you? Okay, so higher purchase is basically deposit plus total monthly payments. Very good. अब total monthly payments कैसे निकलेंगे? Very good, Usma. So we have number of installments times the cost of installment. So basically आपने deposit को add करना है with this particular product, which is number of installments time the cost of installment. The deposit was 20%. So it is basically 20% of the total cost. 20% कैसे निकलेगा total का, which was 980. आप क्या करोगे 20/100 multiplied by 980 कर दोगे. Plus each installment was of $36. It was of $36 for 24 months. अब इसको जल्दी से सॉल्व करें और मुझे अपने आंसर्स बताएं क्विकली ऑल ऑफ यू.
1060. Now, can anyone of you tell me what is the higher price that he is paying? It was actually 980. The actual pay or the actual amount was 980, but now he has to pay a total of 1060 over a month of 24. 24 months के time period पे ये 1060 pay करेंगे. So the extra amount would be the difference of these two values. So this is going to be $80. तो यहाँ पर एक major problem थी कि most of the students took it in the form of compound interest. ये compound interest का question नहीं है. Now moving forward, many of you had problem with question number 5 part B. Question number 5 part B के अंदर भी problem हो गई students को. Question was that there were 1200 workers. And the company has basically increased 15% of them. So the company has increased the workers by 15%. We need to find the new worker count. अब मुझे total figure out करना है current date पे, like what is currently the count of all employees present in the company. So previously it was 1200. We first need to figure out 15% of 1200, which is going to be 15 over 100. Now we'll multiply this with 1200. So you'll just solve this out और आपके पास final answer आ जाएगा as 180. Now one thing over here is that 180 workers are the new workers. ये extra हैं जो add हो गए system में या company में. Now the point here is that we were asked for total number of count of the employees. So previously it was 1200. Now we have got 180 more. So the total employees are going to be 1200 plus 180. Quickly tell me the answer. What is going to be the answer over here? Yes, can anyone of you tell me? 1380. By the way, I've got a sore throat, so I cannot speak like lot louder like I usually do. So आज जो है थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है, लेकिन आप लोगों के हाथ नहीं बैठने चाहिए. जल्दी जल्दी टाइप करके रिस्पॉन्ड करें. Now moving forward, we have the next question, which was question number 9. इसमें भी problem हुई काफी students को. So in question number 9, they are saying that a rectangle was having particular length of 8 centimeter. Now it is increased by 150%. Increased by 150%. Now the point here is कि इसको करने के दो तरीके हैं. एक रेगुलर मेथड है और एक जुगाड़ है, लाइक ट्रिक है. एक वो ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ. अगर आपको समझ में आती है वेल एंड गुड, वरना आप रेगुलर मेथड से कर लें. तो दोनों मेथड्स परफॉर्म करके देख लेते हैं. द फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप सिंपल रेगुलर मेथड से जाओगे तो आप पहले 150% फाइंड करोगे ऑफ 8. दिस इज गोइंग टू बी 12. तो आपके पास 150% आ गया 12 सेंटीमीटर. नाउ 12 सेंटीमीटर इज द इंक्रीमेंट. प्रीवियसली इट वाज 8 सेंटीमीटर. अब 12 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आ गया है. सो दिस इज गोइंग टू बी 20 सेंटीमीटर. The total new length is going to be 20 centimeter now. अब हमने क्या करना है, हमने basically अगर दूसरा मेथड यूज करेंगे तो उसमें 100% इनिशियल वैल्यू होती है हमेशा. अब अगर आप इंक्रीज कर रहे हो परसेंटेज को, तो आप इंक्रीज परसेंटेज को 100 में ऐड कर दें. लाइक इफ यू आर इन अ केस ऑफ इंक्रीमेंट, आप क्या करोगे, 100 के साथ जो भी परसेंटेज इंक्रीज है उसको ऐड कर दोगे.
While if you are in a case of decrease, तो आप क्या करोगे, आप subtract कर दोगे. Yes, that was a problem as well. आपने profit loss का formula use किया हुआ था, which was not correct. Like आपका answer ठीक आएगा, you would have the correct answer, but the formula was not required. Profit loss की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो हम profit loss का formula भी use नहीं करेंगे. तो हमने क्या किया, हमने इंक्रीमेंट देखा, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, सो वी एडेड अप 100 विद व्हाटएवर द परसेंटेज इंक्रीज है. तो अब 250% डायरेक्टली फाइंड करना है आप फॉर 8 सेंटीमीटर. तो आपका आंसर सिंगल स्टेप में 20 सेंटीमीटर आ जाएगा. नाउ इफ यू सी यू हैव स्किप्ड दिस मेथड, जहां पर आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे थे, 12 सेंटीमीटर निकालने के बाद उसे फर्दर 8 के साथ भी ऐड कर रहे हैं. तो दोनों ही मेथड्स करेक्ट हैं, दोनों पे आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 12 सेंटीमीटर अगर आप निकालते हैं पहले और फिर आप उसको ऐड करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्टेप हुआ है विच इज 12 + 8, इस स्टेप को स्किप कर देते हैं. दे जस्ट फॉरगेट और वो अपना फाइनल आंसर 12 सेंटीमीटर लिख के आगे बढ़ जाते हैं. तो इस एक एरर से बचने के लिए हम दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस मेथड इज फार मोर सिक्योर. ये बेहतर है और इसमें चांसेस ऑफ एरर कम है. एज पर एग्जामिनर्स रिपोर्ट ऑफ 2015 एंड एज वेल एज 2011, एग्जामिनर भाई ने बताया था कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम रही इन द वेरी लास्ट स्टेप, जहां पर आपने वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है. वहां पे काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि दे जस्ट हॉप ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय जस्ट फाइंडिंग द वैल्यू. तो मैं आपको ये मेथड दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ. आप सबसे पहले रखते हो 100%. अब क्योंकि ये इंक्रीमेंट का केस है, द परसेंटेज इंक्रीज इज हैपनिंग, सो वी वुड ऐड व्हाटएवर द परसेंटेज इज इंक्रीज्ड विद 100. 100 के साथ हम जो भी परसेंटेज इंक्रीमेंट आ रहा है उसे ऐड कर देंगे. देन वी विल फिगर आउट द वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर परसेंटेज. तो 250% ऑफ 8 हम फाइंड कर लेंगे, जस्ट लाइक वी डू इन अदर केसेस. तो 250/100 हो गया टाइम्स 8, which will give you the answer directly. अब 250 यहाँ से आया है बेसिकली. We have added up 100 with 150. इसका एक सिमिलर क्वेश्चन डिक्रीमेंट का भी हो सकता था, लाइक अली डिक्रीज्ड बाय 80%. तो 80% में क्या होगा, फिर आप 100 - 80 कर दोगे. Now, if you were increasing, you would add, and if you are decreasing, you would subtract. हमेशा 100 से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है. उसका रीजन ये है कि 100 इज रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल वैल्यू. लाइक जो आपका इनिशियल अमाउंट है वो 100% के बराबर होता है हमेशा. So this is the case. Now moving forward, we had a couple of mistakes in question number 15 part B2. पार्ट B2 में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रही, वो क्वेश्चन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. So question number 15 part B2 was saying that is it cheaper for Ahmed to buy 2 small cartridges or a large cartridge. Basically हो ये रहा है कि अहमद भाई एक शॉप पे खड़े हुए हैं where he is buying printer cartridge. अब उनके पास दो ऑप्शंस है. He can either buy smaller cartridges or the larger one. Okay, I'll just start from the beginning. Question number 15 मैं पूरा ही करवा देता हूँ. So starting up in question number 15 part A, they are saying that Ahmed has internet provider. The first one is charging him 30 per month with unlimited access. तो $30 पे अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, while the second internet provider is charging him $0.05 on weekdays per minute, while 0.03 on weekends, and that is also on a minute.
तो स्कीम ए स्ट्रेट अवे इनको चार्ज कर रहा है $30, जबकि स्कीम बी चार्ज कर रहा है इनको 0.05 ऑन वीकडेज फॉर 1 मिनट ईच. लाइक 1 मिनट यूज करेंगे अगर वीकडेज में, विच इज फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे, तो $0.05 1 मिनट के पे करने होंगे. while if he is paying if he is using for weekend days like Saturday and Sunday, तो इनको 1 मिनट के लिए पे करना होगा $0.03. Now the point here is कि इन्होंने basically दोनों में से किसी एक को चूज करना है. Now they have given us a scenario. इन्होंने हमें बिल्कुल next line में ही एक scenario दिया है where they are saying that Ahmed is using 5.25 hours on weekdays. And he is using for 12 hours on weekends. Now they are saying कि हमारे पास जो टोटल टाइम है वो 5.25 hours है weekdays में, like from Monday to Friday, and on weekend he used for 12 hours. Find the cost per month in dollars for scheme B. हमें स्कीम बी की कॉस्ट फिगर आउट करनी है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में. एंड व्हाट वी नीड टू डू हियर इज हमें ये भी फिगर आउट करना है कि विच स्कीम इज कॉस्ट एफिशिएंट इन दिस पर्टिकुलर केस. तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले स्कीम बी की कॉस्ट निकाल लोगे. कॉस्ट कैसे आएगी? ओवर हियर ऑन वीक डेज द अमाउंट ऑफ टाइम इज 5.25 hours while he was being charged at 0.05 a minute. तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 0.05 1 मिनट के लिए है for 1 minute. Now to figure out for 1 hour at the same rate हमें 60 minutes के लिए figure out करना होगा. Can anyone of you do this and tell me the answer? You just need to cross multiply 0.05 with 60. Okay, so we have got $3 over here. Now we'll do the same for weekends as well. Weekends पे क्या हो रहा था? Weekends पे he was being charged at 0.03 a minute. We need to figure out the cost of 1 hour on weekends. So 1 minute was 0.03. 60 minutes is to be found, which is going to be X. Now we'll just cross multiply and see if we can solve it. Yes, tell me the answer, please. $1.8. Perfect. अब बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास कॉस्ट तो आ गई है पर आवर की, बट वी आर बीइंग टेकन इनटू द टाइम डिफरेंटली. लाइक 1 घंटे के लिए नहीं पूछा था उन्होंने हमसे, 5.25 आवर्स के लिए और 12 आवर्स के लिए पूछा है. सो व्हाट वी नीड टू डू हियर इज वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 5.25 विद आवर्ली रेट विच इज $3. तो आप जब वीक डेज को मल्टीप्लाई करवा देंगे विद द कॉस्ट पर आवर, this is going to be 5.25 times 3. This is going to be 15.75. अब ये तो कॉस्ट आ गई है अहमद भाई की इंटरनेट कंजम्पशन ऑन वीकडेज की. वीकेंड्स के लिए भी ऐसे ही करेंगे. यू विल मल्टीप्लाई 12 विद 1.8 विच इज द अर्ली रेट. अब देखें 12 आवर्स इन्होंने यूज किया इंटरनेट एट अ रेट ऑफ 1.8. So this is going to be can anyone of you tell me the answer? Is it is it 21.6? Okay, perfect. So this is 21.6. Now this cost is for 1 week. ये जो टोटल कॉस्ट आ रही है हमारे पास ये 1 वीक की है. वी नीड टू एड इट अप ताकि हमारे पास वीक की टोटल कॉस्ट आ जाए.
So this is going to be 37.35. Now this is the cost of 1 week. पूरे मंथ के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 बिकॉज ईच मंथ हैज गॉट अबाउट 4 वीक्स. तो ऑलमोस्ट 4 वीक्स होते हैं हमारे पास. हम क्या करेंगे, हम 37.35 को मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस समवेयर अराउंड 150. तो स्कीम बी जो है हमें दे रही है $150. कॉस्ट में आ रहा है हमारे पास 150. स्कीम ए की कॉस्ट कितनी थी? The cost of scheme A was $30 only. Now, can any one of you tell me which one is cheaper? Yes, can any one of you tell me which one is the cheaper method? Scheme A, and that is by the amount of $120. $120 cheap हो जाएगा scheme A. Now, this is how you would have solved it. Now, moving forward. Part B1 में ये हमें कह रहे हैं that Ahmed, the same guy, has moved to the market to buy a cartridge. तो इन्होंने बताया ऐसे है that a large cartridge would cost him $48.5 and the small cartridge would cost him $65 for 2 cartridges. Now there's one more point over here to be noted, and that is that the large cartridge would print 1000 pages and 2 small cartridges would print 1300 pages. इन्होंने हमें बताया था कि एक स्मॉल कार्ट्रिज 650 पेजेस प्रिंट कर सकती है. Now, for 2 small cartridges, it is going to be 650 times 2, which will produce 3800. Yes, this is basically a sort of past paper worksheet that I provided to all the students that have attended the previous lessons. Now, they are saying that 2 of the cartridges are going to print 1300 pages, while one of the large cartridge would print 1000 pages. We need to find the cost per page for small cartridge. Small cartridge के लिए per page cost figure out करनी है. So 1300 pages are being printed for a cost of 65. 1300 pages print करने में $65 लग रहे हैं. Now for a single page, this is going to be X dollars. Can any one of you figure out the answer quickly? Okay, jaldi se answer निकालें and tell me the value for 1 page by small cartridge. $0.05. Now, moving forward, in the next part, they are saying, is it cheap for Ahmed to buy 2 small cartridges or a large cartridge? अब हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस परफॉर्म करना है लार्ज कार्ट्रिज के लिए भी. तो लार्ज कार्ट्रिज की पर पेज कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास. सो लार्ज कार्ट्रिज इज प्रिंटिंग 1000 पेजेस एट अ कॉस्ट ऑफ, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी द कॉस्ट ऑफ लार्ज कार्ट्रिज? 48.5. I'm not getting answers from the rest of you. All of you have to give answers. जल्दी जल्दी सबने आंसर देना है. Now for 1 page, the cost is X dollars. Now you just need to sort this out. इसे simplify करें और मुझे अपने अपने answers बताएं. All of you, simplify it and tell me your answers. Okay, so the answer is 0.048. Now, can any one of you tell me whether the small cartridges are cheap or the large cartridge is cheap? Which one is cheaper option? Yes, the large cartridge is the cheaper option. Now, moving forward, we are done with question number 15, part B. Now we are moving on to question number 15, part C. यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम हुई. Most of you ignored the details present
in the last section, जो last section था वहां पे आपने details miss कर दी हैं. They told us that the discounted price Ahmed has to pay is 1134 और इन्होंने ये बताया है कि the three sections are monitor, computer and keyboard. The actual price before the discount वो हमें बताई गई है for the monitor and the keyboard. The monitor was priced at 375 while the keyboard was priced at 70 previously. Now they are saying that Ahmed has bought all of this at some cost of 1134. तो मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि कंप्यूटर की प्राइस एक्चुअली कितनी है. इन्होंने 375 पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया है. They haven't given any sort of discount on 70 either. तो मॉनिटर और कीबोर्ड की जो प्राइस है वो एक्चुअल ही है. There has been no change at all. Now we just need to subtract 375 and 70 from the total cost. Can any one of you tell me the value for it? Yes, can any one of you solve it and tell me the value? Okay, so this is 689.75. Now, this 689.75 is after discount. Discount of 15% on computer. So 689.75 is after discount for the computer. Now the point here is कि मुझे computer पे discount कितना मिला था. The discount percentage was 15% and the selling price is 689.75. I need to figure out the mark price of computer. तो mark price मुझे find करनी है यहाँ पे. I have got the formula for discount percentage, which was discount percentage is equals to mark price minus selling price divided by mark price times 100. You just need to put in the values and you will have your answer for the mark price. इसे solve करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको. Discount percentage is 15, mark price X, selling price is 689.75. Mark price is again X and we will multiply this with 100. Now we just need to sort this out और हमारे पास X की value आ जाएगी. Now we'll just stop over here and we don't need to figure out the value of X. हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे. I'm sure all of you will be able to solve this. आप मुझे पहले ये confirm कर दें कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन solve किए हैं, are all of them clear to you? Or do you have any sort of query in the previous questions? Because we are only left with a few of your more problems and then we have to move on to the next topic. तो जल्दी से पहले मुझे ये confirm कर दें whether you all are perfectly clear on all of these queries or not. Yes, I want to hear from all of you. अभी तक जो कुछ explain हुआ है ये सब clear है आप लोगों को? Yes, Husna, Mahanur, Mina, are all of you perfectly clear on all of these topics? जितने भी questions discuss हुए हैं सब clear हैं? Okay, I haven't heard from Mahanur and Mina yet. Are you people perfectly clear? Okay, so now we are done with question number 15. We are moving further. अब जो next question जिसमें problem हुई है कुछ students को, that is question number 20. Okay, I'll repeat this part again. Question number 15 में हमें जो total cost है वो दी गई है 1134 and the monitor and keyboard are irrespective of any sort of discount. इन पे कोई discount apply नहीं हुआ है. So what we did over here is we subtracted
1134 with 375 and 70. That is 689.75. Now they are saying that we need to figure out the cost of keyboard. Computer की मुझे cost figure out करनी है. So what I need to do is I need to take the total cost and subtract it with keyboard and monitor. जब आप इसको subtract करेंगे आपके पास कंप्यूटर की cost आ जाएगी at 15% discount. And then you need to solve this for the marked price or the actual price of computer. So this is how you would solve it completely and you would get your final answer. Now moving forward, we have question number 20. And we have question number 20 part B, which was creating some problem. It was pretty easy. I don't know problem kyun hui kuch students ko. So over here in this particular question, they are saying that 360 is to be divided in the ratio of 3:2. 3:2 के ratio में हमें split करना है value को. So we just need to figure out the share of Ben. So we have Emmy and Ben over here. They are dividing a certain amount of $360 in the ratio of 3:2. So the total portion is going to be 5. 3 plus 2 कर लेंगे हम, 5 आ जाएगा हमारे पास. So 360 is for 5 portions. I need to figure out the value for 2 portions. I would just simply cross multiply और मेरे पास final answer आ जाएगा. So this is going to be 360 times 2 over 5 and we will simplify this to get our final answer. Now moving forward, हमारे पास question number 21 है. 21 part C में भी कुछ students ने mistake की, which was that you were asked to figure out the cash price, the overall cash price on hire purchase. Hire purchase पे मुझे cash price figure out करना था and the actual amount was 4,500. So some instrument was to be bought on cash price, that would have been 4,500. And if we were to buy it on hire purchase, 25% would be the deposit. And the rest would be of 12 monthly payments of 320. 12 months at $320. We need to figure out the extra amount we are going to pay over here. ये exactly वही question है जो हमने पीछे किया है. Now, we first need to figure out 25% of 4,500. तो आप लिखोगे 25 over 100 times 4,500. You would figure out the deposit or the down payment over here. Yes. Okay, I'll get back to that. But before this, we need to figure this out. 21 का part B, C अभी हम कर रहे हैं. 21 part C. उसके बाद 17 पे चलते हैं वापस. Okay, so can any one of you tell me the down payment? Yes, what would be the down payment in our case? $1,125 is the down payment. Now we need to figure out the hire purchase price. So this is going to be deposit plus number of installments times the cost of installment. So this is going to be 1125 plus number of installments are 12 with each one of 320. This is question number 21 part C. By the way, I am having fever and I've got sore throat as well. तो अगर calculation में कुछ mistakes होती हैं तो थोड़ा सा आज avoid कर लीजिएगा, ignore कर दीजिएगा क्योंकि I've got no energy to speak. बहुत मुश्किल से आज class conduct हो रही है and I'm sure you people would be like feeling it as well. I've got almost zero amount of energy. तो calculation में कुछ numbers में अगर figures में error आता है तो आप लोग उसको check करके सही आंसर लिख लीजिएगा. जरा इसको चेक करके मुझे बता दें व्हाट इज द आंसर.
Can anyone of you tell me the higher purchase price over here? 4965. Okay. So the total cost was 4,500. We are paying 4,965 in total. So extra amount कितनी जा रही है हमारी? Is it 465? Yes. Okay. So we are done with question number 21 part C. Moving back to question number 17. Question number 17 पे आ जाएं जरा. यहाँ पे basically part A जो है in question number 17, it is saying that 1 week he works, like Imran is being paid $16 per hour. In a single week, he works for 35 hours. We need to figure out the amount he is paid for this particular time period. So 35 times 16 karenge, which is going to be around like 510, 550. Yeah, 560. Okay. Now, into the next part, they are saying that Imran is paid 20% extra on weekends. 20% extra pay किया जा रहा है on weekends. He worked for 4 hours on the weekends. He worked for 4 hours on weekends. तो मुझे ये फिगर आउट करना है कि उसकी टोटल अर्निंग कितनी होगी. We need to figure out the earning for 4 hours on weekends. अब actual pay was 16, but he is paid 20% extra. तो आप क्या करोगे? आप 20% figure out करोगे, which is going to be 3.2, I guess. $3.2 extra pay किए जा रहे हैं इसे. So he was actually paid 16, but now he would be paid $19.2. This is per hour rate on weekends. We need to multiply this with 4 and we'll have our final answer. Can anyone of you tell me what is the final answer over here? 76.8. Now, moving forward, onto the last part, they are saying the exchange rate between pounds and dollars is 1:1.8. Okay, I guess this would be pretty easy. आप लोगों से हो गया होगा, but still I'll just give you an idea. 1 pound is for 2.8, in fact $1.8. And he is converting 270 of pounds into dollars. तो इन्होंने जो है basically $270 को convert करवा लिया है into pounds. We need to figure out the value in pounds that would be received. You just need to cross multiply this and you would have your final answer. Now, moving forward. Now we are on to question number 30. Question number 30 के part B में problem रही है students को that it was like difficult for the students to switch the values. Like ये hop कर रहे हैं from one year to the other. ऐसा exactly same question हमने पहले किया था when we were practicing some past papers in regular class. तो होता कुछ ऐसे है कि आपके पास एक सुपर सेवर अकाउंट है और एक एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट है. So the super saver account is giving you 3.4%, while the extra saver is giving you 3.5. Now we need to figure out how much money did the girl have in her account after 1 year if the interest is added into the account. और जो lady है इन्होंने 8,000 deposit किया है in super saver. So Lydia deposited 8,000 in super saver account. Now we just need to figure out the total amount she would be left with
after 1 year of super saver account. ये क्योंकि simple interest है, आप देखें चार्ट में बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है राइट पे that this is simple interest per year. Right over here it is simple interest per year, which is 3.4 for super saver and 3.5 for extra saver. Lydia deposited 8,000, which is the principal. The rate is 3.4 since she took super saver account and the time was 1 year. We'll divide it by 100 and we'll have the simple interest over here. तो हमारे पास simple interest आ जाएगा. Can any one of you solve it and tell me the answer? The rate has been given. Look over here. The rate is 3.4%. ये आपको टेबल में दे दिया था. So the simple interest that she will gain is 272. Very good. अब 272 मेरे पास इंटरेस्ट आ गया है, तो टोटल अमाउंट इज गोइंग टू बी 8,272 in dollars. This is the total amount. अब ये टोटल अमाउंट लीडिया ने उठाई और एक्स्ट्रा सेवर में पुट कर दी है फॉर द नेक्स्ट 1 year. नाउ वी नीड टू फिगर आउट द इंटरेस्ट दैट हैड बीन एडेड आफ्टर 1 year. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यू जस्ट नीड टू फिगर आउट द इंटरेस्ट दैट हैड बीन एडेड. तो आप सिर्फ इंटरेस्ट निकाल के छोड़ देंगे. पार्ट B1 में ये जो अभी हमने परफॉर्म किया है, यहाँ पर इन्होंने हमसे टोटल अमाउंट पूछी थी. The total amount in our account after the interest had been added. लेकिन नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं just tell us the amount that is present in the form of interest. तो पार्ट 2 में हमने क्या करना है, हमने एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट में पुट करनी है वैल्यूज. Now the simple interest is going to be charged at 3.5%. If you see 3.5% एक्स्ट्रा सेवर का रिटर्न है, उस पर ये चार्ज होगी अमाउंट. दिस इज 8272 times 3.5, then again it is for 1 year as well, divided by 100. Simplify this and tell me your answers, everyone. Okay, so he has gained 289.52. अब अगर ये हमसे टोटल अमाउंट फाइंड करने का कहते तो आप कैसे निकालते टोटल अमाउंट. इट वाज 8272 इनिशियली डिपॉजिटेड प्लस द इंटरेस्ट. एग्जैक्टली, सो दिस इज गोइंग टू बी 289.5 और फिर आपके पास टोटल अमाउंट आ जाती है एज 8561. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, in the next part they are saying that Simon kept the money in the same extra saver. Simon ने क्या किया है, एक्स्ट्रा सेवर में ही रखा है और जब सारा इंटरेस्ट इसको 2 साल में ऐड होकर मिल जाएगा तो ये अपनी अमाउंट विथड्रॉ करेगा. तो पूछ ये रहे हैं कि साइमन के पास 2 साल के बाद कितना अमाउंट होगा. Simon has kept for 2 years in extra saver. तो पार्ट 3 में we need to use the concept of initial deposit. What was 8,000 at a rate of 3.5, that was for extra saver, and for Simon it was for 2 years in the same account, divided by 100, and they are asking the total amount in this case. Total amount पूछ रहे हैं हमसे. Can any one of you tell me the answer? Perfect. So this is 560. So the total amount is going to be $8,560. Now this is how you could solve it. अब आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 30 समझ लिया है. Now we are moving on to क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 में एक बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक हुई थी, which was just to find
Okay, so Anna, you have got a good question over here. The point over here is that basically Lydia is like putting some amount in a particular account, फिर उन्होंने उसको withdraw कर लिया है. Once she had withdrawn and again putting that amount into some other account or somewhere else, तो अब जो इनका deposit है वो कितना है? It is not 8,000. अब आप ये जरा इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा. She has withdrawn after 1 year the amount of 8272 इन्होंने विड्रॉ कर लिया है एंड नाउ शी इज डिपॉजिटिंग इट इनटू सम अदर अकाउंट. जब दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं तो अब प्रिंसिपल 8,000 क्यों कंसीडर करेंगे हम? अब प्रिंसिपल रहेगा 8272. The case that I explained in the previous class was related to Simon. Like Simon का केस देखें आप. साइमन ने अपना जो इनिशियल डिपॉजिट था वो 8,000 एक ही जगह पे रखा है. He has not taken it out. अब मैंने एक जगह पर अगर इंटरेस्ट लेना हो सिर्फ तो मेरी जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, वो चेंज नहीं करूंगा मैं. लेकिन अगर इफ लाइक आई एम डिपॉजिटिंग इट इनटू सम अदर अकाउंट, आई वुड रिकंसीडर माय प्रिंसिपल, क्योंकि अब मैं 8,000 डिपॉजिट नहीं कर रहा हूँ, अब मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ 8,262. तो वैल्यू इसीलिए चेंज हो रही है क्योंकि अब हम दूसरी जगह पर नया डिपॉजिट कर रहे हैं. सिंस यू आर डिपॉजिटिंग इट इन अ न्यूअर अकाउंट विद सम डिफरेंट कंडीशंस, तो आपका जो इनिशियल प्रिंसिपल होता है वो चेंज हो जाता है. लेकिन अगर आप एक ही जगह पर स्टैंड करेंगे आप विड्रॉ करके दोबारा डिपॉजिट नहीं कर रहे तो आप प्रिंसिपल को चेंज नहीं करेंगे. अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि अगर मैं अपना अकाउंट ए से अमाउंट निकालूं और फिर वापस डिपॉजिट कर दूं तो फिर क्या होगा? अगेन द कंडीशन इज कि आपने विड्रॉ कर लिया है और अब आप दोबारा से अगर डिपॉजिट कर रहे हो तो नया प्रिंसिपल काउंट होगा, पुराने प्रिंसिपल को हम कंसीडर नहीं करेंगे. गॉट इट? अगर आप विड्रॉ करके दोबारा डिपॉजिट करेंगे आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा. लेकिन अगर आप विड्रॉ नहीं कर रहे, आपने वहीं पे रख दी अगर अमाउंट, तो फिर आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होता. लाइक इन द केस ऑफ साइमन, इन्होंने 2 साल तक एक ही अकाउंट में रखा, विड्रॉ करके दोबारा डिपॉजिट नहीं किया, तो हमने अपना जो प्रिंसिपल था उसे चेंज नहीं किया है. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. अगर इसमें अभी भी कोई क्यूरी है, जस्ट फील फ्री टू आस्क. यस, is it clear now? Okay, so now moving on to question number 33. Okay, I'll come to 31 again. तो उसको बाद में देखते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 32 में बहुत ही सिली मिस्टेक है जो बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स ने की, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं. सो इन क्वेश्चन नंबर 33 पार्ट बी, they were saying that $1,500 was the earning. $1,500 अर्न किए किसी ने and the rent was $525 for each month. Now they asked us to figure out the rent as a percentage of total. Rent as a percentage of the earning or the total. तो आपको एक चीज याद रखनी है कि परसेंटेज ऑफ के बाद जो भी वैल्यू लिखी जाती है उसको हम टोटल कंसीडर करते हैं. वी कंसीडर इट टू बी दी टोटल. तो हम अर्निंग को टोटल कंसीडर करेंगे और जो हमारा रेंट है उसे हमने एज अ वैल्यू कंसीडर करना है. द फॉर्मूला इज परसेंटेज इक्वल्स टू वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100. अब हमने जो है वैल्यू ले ली है एज 525. द टोटल अर्निंग वाज 1500. we'll multiply this with 100 and we'll have our final answer. A few of the students did a mistake और उन्होंने 1500 को ऊपर रखकर 525 से डिवाइड कर दिया. This is a very silly mistake. आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे. पहले क्वेश्चन पढ़ें
रीड द क्वेश्चन. परसेंटेज ऑफ के बाद जो वैल्यू लिखी जाती है दैट इज द टोटल. नाउ आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट बी हैड इश्यूज फॉर अ फ्यू ऑफ यू. तो जरा क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट बी पढ़ लें एक बार. So in question number 31 part B they are saying that Greg buys 60 garden plants. Greg has bought 60 garden plants at $2 each. Now they are saying that he sells 25 of them at 75% profit. 25 plants at 75% profit, while 18 plants at 35% profit. In the last section, they are saying he sells the rest 4/5 of the cost price. अब हमारे पास डेटा सेट में 4 डिफरेंट इन्फोज आ गई हैं. सबसे पहले 60 प्लांट्स एट $2 each, 25 plants at 75% profit, 18 plants at 35% profit, and lastly the rest of them are sold at 4/5 of cost price. अब हमसे ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस दैट ही मेड, स्टेटिंग वेदर इट वाज अ प्रॉफिट और अ लॉस. तो हमने ये जज करना है कि ये प्रॉफिट था या लॉस, प्लस जितना भी प्रॉफिट हुआ या जो भी लॉस हुआ वो हमें जज करना है. नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर इज वी नीड टू सॉल्व ईच वन ऑफ देम सेपरेटली. हमने तीनों डेटास को अलग अलग सॉर्ट आउट करके सॉल्व करना है. अब इसका मैं आपको तरीका समझाता हूँ. सबसे पहले आप क्या करोगे, आप 25 प्लांट्स के लिए सॉल्व करोगे. So for the 25 plants he made a profit of 75%. So $2 का आपने 75% फिगर आउट करना है. So can any one of you tell me what is the 75% of $2? Is it 1.5? जल्दी से कंफर्म कर दें. Yes, 75% of $2. Is it 1.5? Okay, perfect. So he has made a profit of $1.5 for each plant for 25 of them. तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ प्लांट्स के साथ. एक प्लांट का प्रॉफिट आ गया है मेरे पास, 25 का प्रॉफिट मुझे निकालना है. आई विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम and the answer is going to be $37.5. अब मेरे पास $37.5 आ गया. नहीं, आप कॉस्ट प्राइस की फॉर्म में भी कर सकते हो और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. आई एम डूइंग इट डायरेक्टली जस्ट टू सेव ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम. तो मेरे पास 37.5 जो है वो प्रॉफिट आ गया है. Now what I need to do is I need to figure out the profit for 18 plants as well. So 35% मेरा profit है and that is of $2. तो आपने $2 का 35% निकालना है which is going to be probably $0.7 each. तो एक प्लांट पे 0.7 का प्रॉफिट हो रहा है. We'll multiply that with the number of plants over here, which are 18. अब जल्दी से जरा इसको सॉल्व करें और मुझे बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है. Is it 12.6? Yes. Perfect. तो मेरे पास एक प्रॉफिट आ गया है as 37.5. The second one is 12.6. Now the point here is कि next section में जो next batch इन्होंने sell किया है, you can do this with the formula of percentage as well. That is perfect. वो भी आप perform कर सकते हैं, but that would take a slightly more of your time.
तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करना प्रेफर कर रहे हैं. Now what you need to do here is that you need to figure out 4/5 of cost price. तो 4/5 of cost price आप निकालने के लिए multiply by 2 करेंगे. 4/5 times 2. This is going to be 1.6. Now 1.6 is the selling price. तो जितने भी rest of the plants थे हमारे उनको sell किया गया है at 1.6 each. Now the concept over here is कि हमने इसको sort out करना है and we would figure out the loss. तो loss कितना हो गया मेरे पास? $0.4 का loss हो गया at this much of plants. तो total plants कितने थे? The total plants were 60. 25 of them were making a profit of 75%. 18 were making a profit of 35%. तो आप 18 और 25 को ऐड करें, this is going to be 43 and subtracted with 60. तो आपके पास 17 plants आ जाएंगे. You will have 17 plants over here. So he made a loss of 0.4 on 17 plants. Now you just need to sort this out. आपके पास loss आ जाएगा is 12.8 probably. Now he made a profit of 37.5, then 12.6, 37.5 plus 12.6, but made a loss of 12.8. तो आपके पास overall value आ जाएगी. He made a profit overall at a rate of this much. 37.5 plus 12.6 करें minus 12.8 कर दें तो आपके पास overall profit आ जाएगा. This is how you would completely solve it. और आपके पास final answer आ जाएगा. So the statement would be that he made a profit at a rate of probably 37.3. Okay, 0.4 is basically the loss he is making. क्योंकि 1.6 इसने selling price रखी है. So the actual lending price or the cost price was $2 का इसको एक plant पड़ रहा था, but he is selling it at 1.6. So he basically made a loss of 0.4. तो आपने जो है वो 17 plants के लिए total loss figure out करना है. So what you need to do here is you need to multiply 0.4, which is the loss of one plant, multiply this with 17, and you would have your final answer as 12.8, which is the loss on 17 plants. फिर आपने सारे profits और losses को accumulate करना है, gather करना है, and you will have your final answer, which is 37.3. So this is it. आज के लिए इतना ही रखते हैं. बाकी एक दो क्वेश्चन अभी रह गए हमारे, वो हमने नेक्स्ट क्लास में कवर करने हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. सो वील कीप इट टिल हियर और फिजिक्स इंशाल्लाह थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं.